때는 2000년 인도 북부에 위치한 나이니탈. 허니는 평소처럼 딸 나디아의 등교를 도와주고 있습니다. Honey, we need to talk. इससे हमें क्या पता चलता है? Sleepy बच्चे। क्या पता चलता है? बच्चों के साथ ना बहुत गलत हो रहा है। और उसके लिए सुबह 6 बजे धक्का मार मार के उठाते। It's not fair. The school timings are not good at all. 일찍 일어나 학교에 오는 것이 불만인 아이는 엄마에게 장황한 설명을 늘어놓는데 फिर मैं इस सिस्टम को चेंज करूंगी। सिस्टम या टाइमिंग्स? दोनों। लेकिन बच्चे के बारे में कोई नहीं सोचता। I know kids think. Grown-ups don't know. 불만은 많지만 자신의 주장을 목소리로 내는 나디아가 대견하기만 하죠. Wait, Lot. you will never take. Crap from anyone. किसी ने bully किया तो नहीं करने दूंगी। पहला पंच. मैं मारूंगी। You will always be. A lot. 어쩐지 이 장소와 어울리지 않는 수상한 남자를 발견한 허니. 그자가 자신을 미행하고 있다는 것을 직감적으로 깨닫고는 학교에 있는 나디아에게 자신이 임무에 들어간다는 것을 알립니다. Very good, students. Can we say it together? And how do you say that in French? 이런 일이 익숙한 듯 엄마가 임무에 들어가면 자기는 약속된 장소로 몸을 숨기는데 (1992년) 아직 허니가 평범한 삶을 살던 시기. Gonna start. Action. Hi, my name is Annie. Where? Switzerland? Beautiful mountains. क्या कर रही हो? 배우 지망생이었던 그녀는 좋은 배역을 따내기 위해 오디션을 다니고 있지만 아직 좋은 소식을 듣지 못하고 있었죠. हाँ, करती हूँ. अब डरो और चीखो। इसकी माँ का मेरे हाथों में जादू है जादू। अच्छा, और कहाँ का जादू है तेरे? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो लुडो? बाबा का फोन आया था, काम है, डिटेल में बताना है। कब मिल सकते हैं? 바바라는 사람의 연락이 있었다는 말에 생각이 많아지는데요. बनी सर डायरेक्टर को एक और चाहिए फोकस ही लिया था रेडी तू ऑर्डर मास्टर जी आपके लिए जान हाजिर है शूट के बाद मिलते हैं 한편 오디션에 떨어져 속상해하는 허니 곁으로 친분이 있던 나이가 다가옵니다. अच्छा है I really wanted that role. कई महीने से रेंट नहीं पे किया है. हर जगह ट्राई कर रही हूँ, but there's just no work. I feel useless. ये मैं क्या कर रही हूँ? 그녀는 매번 오디션에 낙방하여 자신감이 바닥까지 떨어져 있는 상태였는데 हो गया. क्या डन वर्थलेस हो गया व्हाट इज ऑल दिस हाँ हनी लुक एट मी कितना वैल्यू करते तुझे लोग यहाँ पे कितना फील करता हूँ मैं तेरे लिए एक सॉफ्ट स्पॉट है मैं सच में I desperately need money now. तुझे कितना पैसा चाहिए मैं देता हूँ I'm not a charity case. 마지막 자존심은 아직 남아있어. 경제적으로 힘들면서도 돈을 직접 받기는 거부하는 허니. 라인은 그런 그녀에게 안 된다고 생각하면서도 자신이 하는 위험한 일에 함께할 것을 권유하는데요. किसी के साथ तुझे 30 मिनट बिताने पड़ेंगे You want me to sleep with someone? ठीक ऐसा बोला मैंने मैं तुझे बोलूंगा कि Okay, I'm sorry. लेकिन रिस्की लग रहा है और शेडी भी. Thank you but no thank you. 제안을 사양하고 집에 돌아오는 길. मैनेजर बोला वेट नहीं कर सकते आप सामान लेके जाओ मैं फुल रेंट का पैसा चड्डा अंकल के हाथ में दे के जाऊं. 돈도 일도 없는 그녀에게 제안을 거절한 게 후회되는 일들이 생깁니다. यहाँ हमारे सांस लेने की जगह नहीं है तो एक और को लेकर के आ गई. Will she even pay? 한편 라인은 동료들과 함께 바바에게 하달받은 임무를 계획 중인데 तो डेविड डिसूजा
एक हाईटेक आइटम ब्रोकर करने के लिए बॉम्बे आ रहा है। उसको टेक रात को मिलेगी, उसके बाद वो अपने होटल जाएगा। जो भी करना है ना इस टाइम फ्रेम में करना है। बट वी हैव टू बी केयरफुल, फुल सिक्योरिटी होगी वहाँ पे। ध्यान देना इधर, काम की बात चल रही है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मस्ती मार रहा हूँ क्या इधर? हाँ, इससे सस्ता और टिकाऊ तुझे कहीं नहीं मिलेगा। जस्ट देख मैं क्या बना रहा हूँ ना, कम्युनिकेशन इतना सॉलिड होगा ना। 그들은 데이비드라는 인물이 호텔에 머무는 동안 그가 가진 첨단 기술을 몰래 훔치려고 하죠. हनी, I'll do the job. क्या करना है? 그날 저녁 예정대로 호텔에 목표물인 남성이 방문했고 허니는 특기인 연기를 하며 그의 시선을 끌어봅니다. What all I did for you? ये सब वापस लोकल मार्केट लेके जाओ. हाँ, तुम तो बड़े ब्रांड्स पहनती थी ना इससे पहले। देखो प्लान बहुत सिंपल है। हनी ज्यादा देर तक डेविड को एंगेज नहीं कर पाएगी और हमारे पास बहुत कम टाइम है टेक ढूंढने के लिए। हाँ, सो इट्स अ वेरी क्विक इन एंड आउट ऑफ। तुम जाओ. You go to bed. हाँ, जा रहा हूँ। 계획대로 이 연기에 그가 관심을 보이는데요. Need a drink. Fire tea ना? वैसे रियल लाइफ में बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। कैमरा पे क्या हो जाता है? एक और वर्ड बोला ना and see what I'll do. अप्रिशिएट कर रहा था। हानि तुम्हें क्या लगता है डेविड वापस आएगा? आएगा। सेक्सी गर्ल का फॉर्मूला हमेशा काम करता है। कॉम्स ऑल क्लियर? सब ठीक से सुनाई दे रहा है ना हनी? 카메라 앞이 아닌 현실에서 연기를 하는 게 어쩐지 즐거워 보이는 허니. Let's move. तुम्हारे बारे में सोच के मुझे बहुत खराब लगा। Come on, please don't cry. I'm okay, sir. डेविड, No worry. 그녀가 이토록 완벽하게 그의 시선을 돌리는 동안 나머지 남자들은 그의 객실에 잠입을 시도합니다. चाकू उधर देख। इसके लिए एक डिवाइस या डिस्क होगा, टेक्निकल आइटम जो तेरे समझ के बाहर है। 그런데 금방 찾을 것 같던 물건이 어디에도 보이지 않는데 अंदर एक लॉकर है। अब ये क्या है? एडवांस टैकेश। ऊपर देख, थैंक यू बोल गॉड को कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ। डिस्क ये रूम में नहीं है। 한편 남자의 이야기가 지루해질 때쯤 동료들이 방에서 나온 걸 확인한 허니. Actually, मुझे जाना है. तुम तो सैड थी अभी। हाँ, अभी फर्स्ट क्लास हूँ. भूल गई बॉयफ्रेंड को. Thank you so much. सुपर थी कि नहीं? जो भी चुराना था मिल गया? वही मिला। शायद उसी के पास होगा, उसकी पॉकेट में। 자기의 노력과는 별개로 일이 잘 풀리지 않은 걸 알게 되죠. मैं ला सकती हूँ. मैं वापस जा सकती हूँ. बट अब ट्रिपल पेमेंट चाहिए. एक्साइटेड है, जाने दे। 자신감이 붙은 허니는 돈을 올려받는 조건으로 직접 물건을 훔치려 다시 데이비드에게 접근합니다. बनी, is he dead? नहीं, डोज का असर है। कुछ घंटों के लिए बेहोश ही रहेगा। Clean up everything and get the disc. 언제 제정신이 들어 깨어날지 모르는 상황에서 가까스로 찾던 물건을 발견하는 허니. एक स्क्वायर चीज मिली है बनी. ब्लैक, पतला. कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा है. वही होगा। लेके जल्दी निकलो। 그런데 결국 데이비드에게 덜미를 잡히고 마는데 सोचना भी मत, प्रोटोकॉल नहीं ब्रेक कर सकते हम लोग। हम उसे बाहर नहीं छोड़ सकते। 한편 그녀를 구출하러 가려는 나이를 자신들의 정체가 들킬 것을 우려한 루도가 말리죠. I don't know सर. मैं फिल्मों में काम करती हूँ. वो लोग मुझे 2000 रुपीस दिए थे ये अच्छी ड्रेस करने के लिए. Believe me सर. सर प्लीज प्लीज फेस पे नहीं सर. प्लीज सर प्लीज फेस पे नहीं. Are you working for Vishwa? 허니가 한참 괴롭힘을 받고 있을 때 그녀를 버릴 수 없었던 나이가 객실로 들어옵니다. 그는 숨겨둔 싸움 실력을 보이며
자신이 평범한 사람이 아니라는 것을 알려주죠. But what's going on? बातें बता दो move. And how do you even know how to fight like this? All units, let's go. लूडो डिस मिल गया जा जाके सीधा डिपॉजिट कर मूव मूव 허니는 자백을 강요당하던 중 들었던 비슈아라는 이름이 누군지 물어보는데 डेविड ने बोला तुम लोग विश्वा के लोग हो. मैं किसी विश्वा को नहीं जानता हूँ You have to thank me for that. थैंक यू सेट लेट्स गो कंट्रोल वही है. पागल हो क्या 생각보다 많은 추격자들에게 뒤를 쫓기는 상황에서 무장한 남자에 의해 동료인 자간이 오토바이에서 떨어지고 맙니다. राही तो निकल जगह शॉट 따라오는 자들을 따돌리는 데 성공하지만 잠시 한눈을 판착후 또한 떨어지게 되죠. वो देख सामने 그런데 차를 타고 끝까지 따라온 남성이 허니를 총으로 맞춰 바닥에 떨어뜨리는데 हनी 다음날 기술을 확보하지 못했다는 임무 실패를 보고하기 위해 본부로 복귀하는 남자. Was it Vishwa? Pretty sure वो सारे प्रोफेशनल्स थे. डिस्क को सिक्योर नहीं कर पाया. Sorry. तुम वो डिस्क कैसे घुमा सकते हो शान किया और विश्वा की टीम उसे चुरा ले गई. 사실 그들은 인도에 본부를 둔 시타델 요원으로 통칭 비슈아라 불리는 정체 모를 인물을 추적하고 있죠. देखो साहब ये तो जल गया है इसे रहने दो नहीं नहीं रखो पर साहब इसे कोई कैसे खाएंगे साथ में मीठा खिला देंगे ओके पहले बुरी खबर सुनो डेविड ने आपका कोड नेम लिया विश्वा उसके एजेंट्स भी स्टैंड बाय पे थे 바바는 요원들의 움직임이 있었다는 것을 심각하게 받아들이는데 ये जूनी का ऑपरेशन है और वो सिविलियन जिसको तुमने मुझे बिना बताए इन्वॉल्व किया उसे चोट लगी है बट शील बी फाइन पर जगन We live and die for it. You know that. It's a necessary sacrifice. बाबा एटलीस्ट अब तो प्रोजेक्ट तलवार के बारे में बताइए 라이가 타라르 프로젝트가 무엇인지 묻자 말을 돌려 대답을 피하려고 합니다. बाबा प्रोजेक्ट तलवार Imagine a tracking system, बेटा, जो दुनिया में किसी को भी ट्रैक कर सकता है. Heads of state, world leaders, rival agencies, agents, us. और सिर्फ इन टारगेट्स कोई नहीं, जिनके संपर्क में आते हैं वो हर इंसान को ट्रैक कर सकता है. 그는 이 엄청난 힘을 갖게 되는 시스템이 악한 사람에게 들어가면 세상이 혼란스러워질 것이기 때문에 자신이 관리하기 위해 손에 넣으려고 한 거라 주장하죠. इसलिए मैंने अपने बेस्ट एजेंट को इस पे लगाया. मेरे बेस्ट एजेंट ने क्या किया? एक सिविलियन को इन्वॉल्व किया. शी इज नो थ्रेट टू अस पापा मैं उसे पहले से जानता हूँ बस हाँ बस यही है बाबा और क्या होगा तुम एक एजेंट हो रहा है. 바바는 요원인 라이가 사랑에 빠져 자신의 의무를 잊을까 걱정이 되는데요. हमेशा याद रखना तुम कहाँ से आए हो. गलतियां ना करने में मदद मिलेगी. हम जो कर रहे हैं ना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और चिकन खाओ मैंने मैरिनेट करने के बाद उसको फ्राई किया है. 엉망이 된 요리를 다시 권하면서 그의 충성심을 확인해 보는데 क्यों? अच्छा नहीं. नाइस वेरी नाइस वही मैंने बनाई. Hello, hi. Rahi. माँ जी मैं तो खुश हूँ कि मैं फाइनली आपसे मिल तो सका मैं इतनी बार यहाँ पे आता हूँ बट यू आर नेवर देयर हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं है कि मेरी बीवी से आकर मिले. ये हक सिर्फ मेरे बेटे को है. 라이는 자식처럼 대해주는 바바에게 감동하며 헌신을 다짐합니다. Any luck? 한편 시타델 요원들은 지난 호텔 사건에 관여한 자들을 조사하고 있었죠. जल्दी मिल जाएगी. मैं जानता हूँ विश्वा का मिलना आपके लिए कितना जरूरी है.
पहले इस लड़की को ढूंढो, फिर सब मिल जाएंगे। विश्वा भी। 허니는 어릴 적 아들만 편애하는 아버지 밑에서 서운한 마음을 가지며 자랐었는데요. 그런 그녀의 마음을 사로잡은 건 용감한 여성이 등장하는 영화였습니다. 하지만 주인공 나디아처럼 무술을 단련하고 싶어도 그녀를 둘러싼 환경이 그걸 용납하지 않았죠. युवरानी आप क्या कर रही हो? मुझे भी fearless नादिया बनना है। युवरानी जल्दी आजा बेटा, राजा जी देख लेंगे। आजा आजा। नाम तो जागर थे नहीं, उन्होंने तुम्हें महल के अंदर देख लिया तो बहुत। 어린 시절에 악몽을 꾸고는 잠에서 깨어나는 허니. हनी वेट 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 टेक इट इजी कुछ नहीं हुआ है जस्ट हैव सम वाटर प्लीज क्या हुआ बड़ी? You'll be fine हनी देख जो लाइफ तू अब तक जी रही थी या जो लाइफ तू जीना चाहती थी उस लाइफ को अब भूलना पड़ेगा 라인은 시타델의 표적이 된 그녀가 더 이상 이전의 삶을 살 수 없다는 것을 사과하며 알려줍니다. जो पुरानी आनी है ना she doesn't exist anymore it's too dangerous 하루아침에 과거를 지우고 새로운 삶을 살아야 한다고 하니 고민이 깊어지는데 पर कभी तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया क्यों? बनी, हम इतने टाइम से फ्रेंड्स हैं। एक दिन बचपन में अचानक कुछ गुंडे आए उन्होंने फायरिंग शुरू की मेरे पापा पुलिस इंस्पेक्टर थे वो बड़े बहादुरी से गुंडों से लड़े और उस फायरिंग में मेरे मम्मी पापा मारे गए इसके बदले में उन्हें प्रशंसा पदक भी दिया और तब से मैं अनाथालय में रहने लगा 밝은 모습에 감춰진 어두운 과거를 듣자 착잡한 마음이 드는데요. I'm sorry. लॉन्ग फकिंग टाइम अगो तुम लोग करते क्या हो? तुम लोग अच्छे लोग हो या बुरे लोग? मेरे बाबा हमेशा कहते हैं सिक्का यही सिक्का पलट किसी का सही किसी का गलत आप अपने हिसाब से सही काम कर रहे हो आपको बस यही देखना होता है रोज इस दुनिया में कोई ना कोई खतरा पैदा होता है 라인은 바바에 대한 믿음이 가득했고 그녀도 그걸 알아주길 바랬죠. फिर अचानक मुझे लगा कि आई मैटर मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ मेरी लाइफ का कोई मतलब है 며칠 후 무언가를 심각하게 고민하던 허니가 잠시 후 내린 결심이 그를 당황하게 합니다. मुझे भी एजेंट बनना है। मैं घर से भाग गई अपने ड्रीम्स पूरे करने। मनी एजेंट बनना है ना इजी नहीं है But it has purpose. यस Because my life should also have meaning. I have to do this. I can hide. I can escape. I can withstand pain. I can learn anything. Please, Bunny. I need this in my life. And you need someone like me. 그녀를 곁에 두고 싶어 했던 라인은 고민 끝에 바바를 찾아가는데요. तो तुम एक मामूली एक्ट्रेस को हमारी फैमिली में शामिल करना चाहते हो? बाबा ये नॉर्मल लड़की नहीं है जब डिस्क नहीं मिला उसने इनिशिएटिव लिया और उसके रूम में गई पकड़ी गई मार खाया फिर भी काम खत्म करके वापस आई आई थिंक शी इज द वन बाबा वी नीड हर इन आवर टीम You clearly seem to see something in her. 허니가 팀에 참여하는 것을 별로 탐탁지 않게 생각하는 듯 보였지만 그의 간곡한 부탁과 설득에 마지못해 허락을 해주는데 आई ऑलवेज गार्ड अप फॉर द ब्लॉक अपना स्टांस दिखाओ दिखने में जूता लगता है लेकिन है जीपीएस ट्रैकर कॉम्पैक्ट मॉर्स कोड मैंने बनाया 라이에게 강도 높은 훈련을 받기 시작하는 허니. 어릴 적 용감한 용사인 나디아를 동경했던 그녀에게 육체 단련은 고되지만 즐거운 시간이었는데요. 3, 2, 1, टाइम अप। मैंने वो डेटा को सारे डेटाबेसेस से क्रॉस चेक किया और मुझे ये नाम मिला 한편 바바와 팀원들은 지난번 탈취한 기술을 역추적하여 이 기술이 라구 박사의 회사에서 나온 것을 알게 됩니다. यूएटेक नाम की वहाँ तो पता चलता है कि पूरा सिक्योरिटी था So UATech is a front, is it? एक बहुत ही हेविली फंडेड और हेविली सीक्रेटिव मिशन चल रहा है उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट तलवार किस स्टेज पे है प्रोजेक्ट तलवार? डेटा के हिसाब से तो काफी एडवांस स्टेज I want him under 24-hour surveillance immediately. We cannot let
Project Talwar succeed. 뚜렷한 활동 없이 박사를 감시하며 허니에게는 각종 훈련만 계속되는 나날을 보내는데 अगले हफ्ता डॉक्टर रघुराव बेलग्रेड के लिए निकल रहे हैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट तलवार अभी तक पूरा नहीं हुआ है. It's missing a critical piece. कोड नेम आर्माडा. आई थिंक हमें बेलग्रेड के लिए निकलना चाहिए और इस ट्रिप का मेन गोल ये मिसिंग लिंक है. Make a final plan. Let me know. Dismissed. 드디어 새로운 작전이 시작되고 목표물에 친밀하게 다가가 정보를 얻어내기 위해 새내기 요원인 허니도 작전에 투입되죠. अपनी नई प्रोफाइल याद है तुम्हें? माधवी कुमार born in Tirupati, माँ पल्लवी gynecologist, पिताजी चरण veterinary surgeon, 2 brothers विराज and विजय at Oxford law, not many friends, एक pet rabbit था जिसे मेरे भाई ने मार दिया by accident, उसके बाद no more pets. 동료들에게 빈틈없는 모습을 보이며 놀라움을 받지만 여전히 그녀를 믿지도 인정하지도 않았는데요. Let me be frank. हमारे एजेंसी में आज तक किसी लड़की ने काम नहीं किया. Because I don't trust women. तुम हमारे लिए बोझ बन सकती हो. This is not a nice place for a woman. I'll work twice as hard as any man, so. वो तो करना ही पड़ेगा. No? 이불 씨는 오직 임무 성공으로만 해소될 수 있으며 실패할 경우 라이가 모든 책임을 져야 하는 심리적 압박 속에서 허니의 첫 요원 임무가 시작되는데 हम सब जानते हैं कि डॉक्टर रघु का कॉन्फ्रेंस अटेंड करना that has something to do with प्रोजेक्ट तलवार. हनी, you're up. 타인을 연기해 목표물에 다가간 다음 도청 장치를 설치하는 요원으로서의 첫 임무를 시작합니다. Doctor is surprised for sure. Good. Proceed. It's an honor to meet you, Dr. Raghu. I must say, you are the reason I'm here in Belgrade. 변장한 허니가 말을 걸자 어쩐지 반가운 표정을 짓는 라구 박사. I'm sorry, I kept staring at you. तुम्हें देखकर और किसी की याद आ रही है. You both look so similar. Really? Yes. कौन? Charu, my wife. No. We do look similar. Hello, Dr. Raghu. Hi, Shasha. How are you? I'm good, good. 유명한 박사인 만큼 아는 사람이 많아 허니를 옆에 두고 다른 대화에 집중할 때 이 기회를 틈타 도청 장치를 장착합니다. Okay, see you later. Thank you. It was lovely meeting you, Doctor. He entered the glass building, number 10, and Zuni's agents are standing guard outside. Showing it's registered under some shipping company. 선행 작전이 성공했지만 도청 유효거리 때문에 팀원들은 라구 박사의 주변을 계속 미행하며 필요한 정보가 담긴 대화가 오가기를 기다리는데요. तेरा बगी बोगस है. ये कंक्रीट स्ट्रक्चर्स दिख रहा है बाहर. इसके वजह से वेव्स ब्लॉक होते हैं. बग बोगस है बग. है सुनिए. हेलो डॉक्टर रघु. डॉक्टर हर्षन. जानता हूँ कि आपके एजेंट्स मुझे फॉलो कर रहे हैं. करने दिया? नो जस्ट बैक ऑफ. अरे सर ये सब आपकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं हम. आपको तो पता ही है कल की मीटिंग हमारे लिए कितनी सेंसिटिव. 타라르 프로젝트의 성공을 기대하는 시타델이 박사의 안전을 위해 붙여둔 감시 요원이 마음에 들지 않아 보이는데 सर we just want to confirm अगर आपका दोस्त आएगा क्या उसने आपको कुछ बताया है कि वो आर्माडा कब और कहाँ देने वाला है? वो मुझे अब तक नहीं पता. अगर आपके एक भी एजेंट को देख लेगा तो वो गायब हो जाएगा. डॉक्टर रघु की मीटिंग कब और कहाँ होने वाली है? We need to figure out. 한편 바바팀 요원들은 라구 박사가 시타델 요원들의 감시를 거부한 지금을 최적의 타이밍이라고 생각하며 다시 한번 그에게 접근하려 합니다. The future is bright. I know it sounds ironic. Newer and more terrifying weapons are being developed around the world right now. But my dream is to make the world a safe place with the right technology. 그런데 허니의 심정에 변화가 생기기 시작하죠. That's why I say the future is bright. 라구 박사에게 접근할수록 그의 신념과 주장이 그녀의 생각을 바꾸려 하고 있었던 건데요. हनी डॉक्टर रघु को इन्फॉर्मेशन मिली है. उन्हें अभी किसी ने कार्ड दिया है. We need to get that card. Find a way. Here's your coffee, sir. Exactly how you and I like it. Thank you. 한때 배우를 지망할 정도로 연기에는 경험과 실력이 출중했기에 박사에게 점심 식사를 요청하며 둘만의 시간을 갖는 일을 어렵지 않게 해냅니다.
The chef here makes amazing South Indian food. Thank you. Oh, thank you. Sir, if I may ask you a question. Please. आपका क्या मतलब था when you said that satellite technology can promote peace? 자연스럽게 기술적인 대화를 나눌 수 있는 순간을 마련했지만 갑자기 몸에 이상이 생기기 시작하는데 That's why it's important that it's been used by the right people. You know, in the right hands. Are you okay? ये हनी कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। बाबा आप यहाँ? आपका तो आने का कोई प्लान ही नहीं था। 허니가 아직 돌아오지 않아 초조해지고 있을 때 예고도 없이 방문한 바바가 새로운 요원을 팀에 데리고 옵니다. मीट केदार केरी अपने आप को साबित करने के लिए उतावला हो रहा था तो मैंने कहा चलो बेलग्रेड आज से he'll be part of this op just brief him come on use him बाबा, do we need additional support? बेटा we don't know वहाँ कैसी सिक्योरिटी क्या सिक्योरिटी राइट वेलकम केटी। एक लड़की भी थी ना? 대답하기 곤란한 질문을 하는 케다르. क्योंकि बाबा मैंने उसे डॉक्टर रघु के पास भेजा है to get some additional information. उसे 3 बजे होना चाहिए था। that's true it's 3:30 right? She'll be here. okay आप बोलते हैं तो मैं इसकी लास्ट नोन लोकेशन पे चेक करके आता हूँ। क्यों? क्यों भाई? जब तक मैं नहीं बोलूँ ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 그는 일부러 라이가 곤란해할 질문과 말을 하며 화가 나게 하려고 하죠. okay let's get to work come on 한편 라구와 식당에서 식사 도중 갑자기 기절했던 허니가 병원에서 깨어나는데 What's wrong with me, doctor? No wrong. Congratulations. Sorry? You're pregnant. Mother soon. Yes. 2 months pregnant. 이제 막 요원 활동을 시작하는 중요한 시기에 예상치 못한 소식을 듣고는 당황해하죠. So you're up? Nice, nice. Doctor, can she leave? Yes. You come with me. I'll fix you something. 갑작스럽게 알게 된 임신 사실 때문에 넋이 나간 허니는 임무도 안중에 없는 상태로 라구 박사가 옆에서 떠들어대는 것을 멍하게 듣다가 기지로 복귀하게 됩니다. I'm so sorry I'm late. मेरा अचानक से एक्सीडेंट हो गया था। तुम ठीक हो? चोट तो दिखाई नहीं दे रही। केरी do you have something to tell us or just the accident 바바가 늦은 이유를 추궁하려고 하자 허니는 알아온 정보를 공유하며 임무는 완수했음을 주장하는데 Atlantis Heart Gallery, Republic Square 1A. हमें लोकेशन पे जाना चाहिए। एंट्री एग्जिट वगैरह सब कुछ स्कोप आउट कर लेना चाहिए। हनी, कब? हनी, तुम रुको। 작전 수행 시간이 지연되고 아무 연락도 없던 요원이 무사히 돌아오는 일은 어쩌면 경계해야 하는 상황이기도 한데요. तो कल तुम फील्ड पे नहीं जाओगे Let me be a part of this op. नहीं काम करते वक्त एक्सीडेंट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी इन केस कुछ बैकअप की जरूरत पड़े तो आई कैन काउंट ऑन यू डिसमिस्ड 결국 허니는 의지와 상관없이 라구 박사의 작전에서 빠지게 되죠. तुम ठीक हो? क्या हुआ? 사실 바바의 의심대로 그녀의 마음속에는 이 임무 목적에 대한 의구심이 생겨 있었는데 Are you sure Dr. Raghu's a bad guy? तुमने उसके साथ कुछ टाइम बिताया, बहुत जल्दी दोस्ती हो गई, and you seem like some sort of a father figure now. डॉक्टर रघु जूनी के साथ काम करते हैं। जो एनिमी के साथ काम करता है, वो एनिमी हुआ ना? But maybe वो लोग गलत नहीं कर रहे हैं। Right. और डॉक्टर रघु को कुछ नहीं होगा ना? पर्सनली हमें डॉक्टर रघु के साथ कुछ लेना देना है नहीं। You know that. 라이는 계속해서 그녀를 설득하지만 그 또한 기술을 훔치는 이유는 알겠지만 훔치고 난 후 어떻게 되는지는 알지 못해 설명할 수 없었습니다. And हम गलत हुए तो? अरे क्या गलत सही का भूत लगा है तुम पे? Bunny, all I want is for us to have a good life. You and I and our family. Honey, this is not the fucking time, यार. It's not. 자신의 임신 소식을 전해 우리를 위한 일을 하자고 하고 싶었지만 바바에 대한 맹목적인 충성심을 보이는 그에게 차마 뱃속 아이의 사진을 전달할 수 없었는데 임무에 성패가 걸린 베오그란데 작전의 날
잠복해 있는 건 바바의 팀만이 아닌 시타델 요원들도 사방에 배치되어 있었죠. डॉक्टर रघु पे हर वक्त नजर रखना. Don't let him spot you. जैसे मीटिंग खत्म हो जाएगी मैं हमारा डॉक्टर रघु से ले लूंगा नहीं, हम उनके होटल वापस जाने की वेट करेंगे. अगर उन्हें पता चला कि we are still tailing him, he might create a problem. ठीक है All agents come in. Dr. Raghu's on the move. Guys, I've got eyes on Dr. Raghu. 한편 라구 박사가 미술관에 온 이유는 자신의 프로젝트를 완성할 마지막 조각이 되는 기술을 친구에게서 전달받기 위함이었는데요. Just connect the chip to your system. It will accelerate your program. My team and I took years to develop it. No one else has this. I doubt anyone will develop anything like this for the next decade. Be careful. Everyone will want their hands in this. That's why I work with the right kind of people, you know, who bother about the goodness of mankind. 모두가 노리고 있는 무적함대라 불리는 기술이 라구 박사에게 전달됩니다. Shan. ईशान क्या है? बच्चन की फिल्म है. It's good. Thank you, my brother. Thank you. He's come out, man. We can see him. 미술관에서 박사가 나오자 양 팀의 요원들이 모두 분주해지기 시작하는데 Keep moving. I have a gun. जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करो, वरना गोली मार दूंगा. Still. This is not a part of the plan, Bunny. Come, Bunny. क्या उसे What do you mean we lost him? 라이의 돌발 행동으로 허니와 시타델 요원 샨이 다급한 마음에 직접 현장으로 뛰어가죠. Where did he vanish? Move faster. गौरी Vishwa's team is there? पता नहीं पर इस बार नहीं छोड़ूंगा 데이비드 작전에서 얼굴이 노출된 허니는 하필 샨에게 발각되어 급하게 도망을 칩니다. Don't move. अब कहाँ भागोगी Sorry. Come on. I can see Dr. Raghu. He's not alone. 시타델 요원들은 라구 박사 옆에 누군가가 있다는 것을 눈치채며 맹추격 중이죠. चलो चलो चलो. We'll intercept them at the next station. वो वीडियो टेप कहाँ है? Do you know how precious it is? Open it. 라이는 결국 무적함대 기술을 손에 넣게 되는데 그런데 그가 이런 돌발 행동을 한 이유는 따로 있었습니다. 허니가 그를 좋은 사람으로 생각하고 있지만 임무에 따르면 그를 죽여야만 했기 때문에 그녀를 슬픔에 빠지게 하고 싶지 않아서였죠. Package received. I'm leaving the plaza station. Did you finish the job? हाँ, अरमाना मेरे हाथ में. Did you finish the job? जो चाहिए था वो मिल गया है और कुछ करने की जरूरत नहीं है. You know the deal. Yes, I know the deal. कहा ना कुछ करने की जरूरत नहीं है. Finish the job, Roy. बाबा टेक मेरे हाथ में है. I'm on the way out. You know your orders. 하지만 상황은 생각대로 흘러가지 않는데 Just finish the goddamn job, Roy. Don't do it. Don't do it. Don't do it. Copy. 한편 기술이 나쁜 놈들 손에 넘어갔다고 생각한 라구 박사는 절망에 빠진 채 자리를 떠나지 못하고 있습니다. Dr. Raghu, Madhavi! Dr. Raghu! Dr. Raghu! Madhavi? Just wait there. 그때 불길한 표정으로 라이가 다가오죠. Dr. Raghu is dead. And we've lost the Armada. 요원의 손에 죽음을 맞이하게 되는 건 라구 박사의 친구도 마찬가지였는데요. तुम कुछ नहीं बोलोगे after what What did I do? हाँ? मैंने वही किया जो मुझे बोला गया था. you promised me.
मम्मी डॉक्टर रघु को कुछ नहीं होगा 라이가 우려한 대로 허니는 슬픔에 빠져 있었죠. You know what, honey? You know what else I am? I'm loyal. I'm loyal to my family. You begged me to be an agent. तुम्हें ना अपनी फैमिली का हिस्सा कोई बनाना ही नहीं चाहिए था. गलती हो गई. बहुत बड़ी गलती हो गई. 자신이 한 일에 괴로워하면서도 인문이과 따를 수밖에 없다는 정당성을 부여하며 그녀를 비난했고 결국 두 사람의 관계는 그렇게 끝이 나는데요. देखो, I'm sorry I lost Armada. this is the biggest disaster of my career at Citadel. 이번 작전의 실패로 최악의 상황을 맞이한 시타델은 좌절과 분노에 빠졌습니다. I'll get them. I promise. 시타델에 반갑지 않은 손님으로 찾아간 허니. अरे तुम्हारी वजह से ये हालत है मेरी. इसके पहले कि मैं दोबारा गोली चलाऊं. नूरी अधूरी जो भी तुम्हारा नाम है. शान, My name is Honey. बोल. उन्हें रोक सकते हो तुम लोग. तुम क्यों करोगी हमारी हेल्प? 그녀는 정의롭지 않은 바바팀을 떠나 시타델을 돕게 되는데 I must say, someone had second thoughts. मुझे तो एक पल के लिए लगा कि मिशन कंप्लीट नहीं होगा. अगली बार सिर्फ मेरी सुनना. ये जो टेक हमें मिला है ना इस मिशन के जरिए, अरमाडा, वो हमारे एमकी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एमकी क्या है बाबा? 기쁜 마음의 실수로 진짜 속내를 드러내고 맙니다. एमकी is our very own surveillance and weapons program. हम तो इसके खिलाफ लड़ रहे थे ना बाबा. तो हमें वेपन्स प्रोग्राम की क्या जरूरत है? You know, जिंदगी में एक ही ख्वाब था मेरा, जिनके ख्यालात मिलते जुलते हो, जिनकी मंजिलें एक हो. आखिर इंसान को चाहिए क्या होता है बताओ? बराबरी का वादा. जो रोज सवेरे उठकर एक दूसरे को मारने काटने के लिए दौड़ते ना हो. 바바는 당황한 건지 장황하게만 얘기할 뿐 핵심이 없는 말들을 늘여놓죠. हाँ, हमारे विचारों से जो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो जो भी हो, we'll eliminate them. And what about collateral damage? And you expect me to answer that? 작전이 종료되고 팀이 철수하는 길. Sir, the chakra is live. 시타델과 내통을 시작한 허니는 추적기를 작동하여 자신들의 위치를 그들에게 전달해 줍니다. और मुझे लगा कि डॉक्टर रघु एक हार्मलेस सिविलियन है. तो उनको मार के हमें क्या मिलेगा? कभी सेकंड थॉट्स आते नहीं थे तुमको. This is mobile unit 2. Target spotted. We're following them. राही कुछ तो गड़बड़ है. Check with KD. क्या तूने वही नोटिस किया जो मैंने देखा अभी? हाँ, blue van right? 호위망이 점점 좁혀지는 가운데 눈치 빠른 라이와 케다르는 이상함을 느끼는데 All cars check in. Go one check. Car 2 check. Car 3 check. Car 4 check. Car 5, check. What? Go on, it's down. Go on, it's down. Stay down. We're surrounded from all sides. Don't let them get away. 무장한 시타델 요원들의 습격에 팀 절반을 잃고 가까스로 도망을 시도하지만 그것마저 쉽지 않은 상황이죠. Hurry up, man. What are you doing? सिटाडेल कितने एजेंट्स कहाँ से आए? ये रूट हमारे प्लान में नहीं था. How the hell did Zodiac team? 중간에 경로를 바꿨음에도 정확하게 위치를 발각당하자 자연스럽게 허니에게 의심이 쏟아집니다. 바바는 무적함대 기술이 담긴 물건을 챙기려 하지만 이미 내용물은 사라진 상태였는데요. क्या प्रॉमिस किया उसने तुमसे? हाँ? अरे तू एक किलर है. इस जगह इस दुनिया पे कोई जगह नहीं तेरे लिए. समझा तू? एक लड़की के लिए मिशन को खराब कर दिया तूने. 결국 라이를 비난하며 팀에서 내쫓아버리는데 Honey! Why the fuck did you do this? I had to do the right thing, Bunny. तुम्हारी वजह से सब कुछ खत्म हो गया है. सब कुछ. Honey, stop while shoot. 떠나가려는 그녀를 어떻게든 잡아보려고 하지만
그녀의 한마디에 도저히 그렇게 할 수 없게 되죠. If you shoot me, you shoot our child. Go after Honey. Get me there, brother. She's upstairs on the bridge. Go, go, just go. I'll be fine. Go. 허니의 차량이 케다르에 의해 폭파되는 걸 보게 됩니다. 바바는 시타델 요원들에게 붙잡히고 라인은 가족도 연인도 모두 잃고 그 자리에 주저앉고 마는데 그렇게 8년을 딸 나디아를 낳아 숨어 살던 어느 날 의문의 괴한에게 뒤를 잡혀 기절당했던 건데요. 자동차 트렁크 안에 납치당해가는 그녀가 깨어납니다. 몸에 지니고 있던 칼날을 이용해 열심히 포박을 풀어보는데 한편 나디아는 약속 시간이 되어도 엄마 허니가 돌아오지 않자 평소 교육받은 대로 V 삼촌에게 연락하죠. हनी ने बोला था आपको कॉल करने को if she is running late. वो अब तक वापस नहीं आई? No, आपको मुझे पिकअप करना है. पिक करना मतलब कहाँ से? नाडिया, where are you right now? He shot poor Shravan. वी अंकल, आप हमेशा इतने सैड स्टोरीज क्यों सुनाते हो? 다행히 엄마가 올 때까지 보호받고 있는 아이. हनी कहाँ है अब तक? वापस नहीं आई? Why दी? ऐसी सिचुएशन में we have to be patient. कैसी सिचुएशन में? 그런데 밤이 점점 깊어지자 수상한 무리가 집으로 다가옵니다. Let's go. Yes. सर वो हनी ने भेजा था बच्ची को लेने के लिए। हनी ने आपको भेजा है अपनी बेटी माया को लेने के लिए? हाँ सर, इस माया हूँ। उसका नाम माया नहीं है। कौन हो तुम? 케다르는 망설임 없이 남성을 제거하는데 क्या देख रहे हो? ढूंढो। 평소 엄마에게 대피 훈련을 잘 받았던 나디아는 우는 일 없이 위험한 남자들을 피해 집을 도망 나갈 준비를 하는데요. 도움은 요청했지만 마냥 기다릴 수만은 없어. 나디아는 자신의 힘으로 집을 벗어나기로 결심하죠. Sorry, my daughter is in danger. उसके पास जाना है. 영리한 딸의 활약으로 두 사람은 겨우겨우 다시 만날 수 있게 됩니다. Nadia! Honey! Nadia! Are you okay? Are you okay? I got hurt. Him call इधर है. You're fine. You're fine. Okay? Come on. Let's go through the play rules. याद है मुझे रोज रात को तो करते हैं. 자신이 쫓기는 신세지만 딸인 나디아까지 위험해질지 모르기에 미안한 마음을 숨기고 냉정한 태도로 작전 규칙을 몇 번이고 되새겨주는데 Nadia, code words. Say, lay, help.
한편 8년 동안 허니가 죽은 줄로만 알았던 라이는 루도가 전해준 메시지를 통해 그녀의 생존 소식을 듣게 되죠. फिर लूडो का मैसेज आया कि हनी I still can't believe it. मेरी एक बेटी भी है. And she's in danger. 마지막 작전 이후 오랜만에 차코를 찾아가 도움을 요청하는데요. फिर से आग में कूदने वाली बात है ये. कूदना है. कूदना है. मुझे मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं. बचपन से हमें एक ही चीज चाहिए थी. फैमिली. तू मेरे बनेटी का ही पार्ट है. We are family. चल. चाको क्या बात कर रहे हैं? जाएंगे साथ में जाएंगे. 생사는 확인했지만 아직 허니의 소재는 알 수 없어 다시 한번 루도에게 도움을 요청해 보는데 한편 나디아를 데리고 은신처를 찾아온 허니. नकुल भैया, ये देखो. 하지만 V 삼촌 집에서 나온 부동산 서류 때문에 그 위치를 발각당하고 케다르에게 보고가 들어가게 됩니다. शायद उसका सेफ हाउस है. मैं जाके देखता हूँ. 바바팀이 허니의 소재 파악을 하고 있을지 모른다고 생각해 라이는 그들 소유의 기지를 습격하는데 We have to be careful. अगर हनी यहाँ है, तो उसे लेके निकलते हैं. 특히나 실력이 좋은 두 사람은 손쉽게 기지 내부로 잠입하죠. चाको, तू वहाँ देख, मैं यहाँ देखता हूँ कि वो दोनों यहाँ पे है नहीं. भाई एक तरह से अच्छा है ना. अगर यहाँ नहीं तो कहीं और सेफ होंगे यार. हम निकलते हैं यहाँ से. Right, don't do this यार. We have to leave. तो ढूंढना कुछ ना कुछ मिलेगा यहाँ पे. 적의 지원이 올지도 모르는 긴박한 상황이지만 허니에 대한 단 하나의 단서라도 찾고 싶어 쉽게 자리를 떠나지 못하는 라이. चाको कोऑर्डिनेट्स. शायद ये हनी के हो सकते हैं. ये कोऑर्डिनेट्स इन्होंने पूरी टीम को भेजे. 지원군을 이끌고 온 것은 바바의 다음 수족이 된 케다르였는데요. 처음 볼 때부터 악연이었던 두 남자가 만납니다. गलती कर दी. वापस नहीं आना चाहिए था. Goodbye, Katie. Wrench was a grenade. I fucking hate them. Katie다. Katie. 허니가 있을 만한 단서를 알아내긴 했지만 라이는 적들이 그걸 가지고 있었던 게 불안하기만 하죠. मुझे भी शूटिंग करना सीखना है. पहले बड़े हो जाओ फिर. प्रॉमिस? प्रॉमिस ब्रेक किया ना तो फिर मैं अपने आप सीख लूंगी. 은신처에서 휴식을 취한 지 얼마 지나지 않았을 때 근처에 누군가 접근했음을 알리는 경고음이 울립니다. नाडिया, play. In. Madman are coming, but you are? Brave and fearless. And I am? My mother. और आप मुझे कुछ नहीं होने दोगी. मैं लड़की अलबेली हूँ, आरिश हूँ, फिरती लावारिस. 은신처를 포위한 채 사방에서 침입해 오는 적들. 딸 나디아를 데리고 도망가는 것은 무모하다고 판단하여 허니는 일대 다수가 될지 모르는 이 싸움을 목숨 걸고 싸워 이겨내려 하죠. 다섯 명이 넘는 남자 요원들을 상대로 겨우 이긴 허니는 큰 부상을 입은 채 은신처를 떠납니다.
रकुल भैया मैं आप ही को फोन कर रहा था। वो मिली? नहीं, वो बच गई। केस खत्म। वो हरामी वापस आ गया। कौन? राही। 한편 좌표에 찍힌 장소에 도착한 라이. 이곳에서 싸움이 벌어졌지만 찾는 사람의 모습이 없다는 것에 안심하게 되죠. लगता है गाड़ी में आगे निकल गई। हानि ने ये सारा खून खराबा अकेले मचाया। वो नहीं था? ट्रेन भी किसने किया है? जिसे मैंने ट्रेन किया ये वो हनी नहीं है। 부상이 심해 휴식이 필요한 허니는 멀리 가지 못한 장소에서 기절하듯 잠에 들어 있었습니다. I know मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, पर जो डिसीजंस मुझे लेने पड़ेंगे ना, आप आराम करो। मैं 10 मिनट्स में आई हूँ। संभलती या ना करूं कोई 라이가 은신처에서 찾은 나디아의 앨범을 보며 슬픔에 잠겨 있을 때 운명의 장난처럼 그들의 뒤편으로 아이가 나타나는데요. अंकल, चोट लगी है, दवाई चाहिए। नाडिया, 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 get in. 떠돌이 신세가 된 두 사람은 다행히 마음 좋은 사람들을 만나 하룻밤 묵어갈 수 있는 방을 얻게 됩니다. मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे ये पनिशमेंट मिल रही है? You broke your promise. जब प्रॉमिस किया था तब सिचुएशन अलग थी। You say make the best of any situation. अगर आप नहीं चाहती कि मैं आपकी एडवाइसेस फॉलो करूं, then don't teach me all this. 어리지만 똑똑한 딸아이의 반론에 할 말을 잃게 되죠. कार से बाहर नहीं जाना था, बस बात खत्म। For your information, ये पनिशमेंट कुछ भी नहीं है। I like staring at the wall, and the wall likes staring at me. हेलो। कभी सोचा नहीं था कि फिर से बात होगी। अच्छा लग रहा है तेरी आवाज सुन के। 오랜만에 옛 친구인 루도에게 연락하는 라이. 그는 8년 전 사건 이후 바바에 대한 풀리지 않는 의구심이 있었고 그걸 해소하기 위해 아직도 그의 밑에서 일하고 있는 오랜 친구에게 무리한 부탁을 하게 됩니다. Anyway, काम क्या है बोल? बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तेरे लिए। अगर तूने कर लिया बाबा की एजेंसी छोड़नी पड़ेगी। काम क्या है बोल? मुझे बाबा के सारे फाइल्स चाहिए। तुझे बाबा की फाइल्स क्यों चाहिए? ऐसा क्या है उसमें? हमारी एजेंसी का चैप्टर खत्म हो गया था। फिर बाबा ने फिर से सब कुछ कैसे रिएक्टिवेट कर दिया? Knowing बाबा 8년 전 시타델에게 붙잡혔던 바바가 어떻게 풀려나 다시 팀을 꾸리고 자신의 야망을 키울 수 있는지 라이는 그 의문을 항상 품고 있었는데요. कुछ खा लेते हैं। क्यों? 한편 거듭되는 실패에 케다르는 죄송한 표정을 지으며 바바와 함께하는 식사 자리에 초대되었죠. तुम्हारे लिए। Start. Have I failed you, बेटा? मेरी परवरिश में कुछ कमी रह गई क्या? नहीं। तो मेरी गांड क्यों मार रहे हो बेटा? फुल थाली। समय था तुम्हारे पास तैयारी करने की, लेकिन नहीं, एक लड़की को नहीं पकड़ पाया तुम। Come on, eat. 케다르를 전임자와 비교하며 자존심을 뭉개고 열등감을 느끼게 하는데 इसलिए मैं राही की तारीफ करता हूँ हमेशा। सिर्फ 2 लोग थे, वो किधर बेस 33 को ट्रेस किया, अब तुम। वो लड़का है ही ऐसा, हमेशा एक कदम आगे रहता है। वो जहां भी छुपा होगा बाबा, मैं उसे ढूंढ लूंगा। And I'll get him for you. 바바는 8년 전 라이에게 그랬던 것처럼 그가 목숨도 기꺼이 걸 정도로 충성심을 갖게 하기 위해 자기의 특별한 가족이 된 듯한 기분이 들도록 상황을 연출합니다. आइए ना हमारे साथ खाना खा लीजिए। नहीं, वो तो काम धरा था, हो गया वो काम। हाँ, no, sorry, I need to finish something, but very nice to meet you. Try the chicken. कैसा है? 오랜 친구인 라이의 부탁을 들어주기 위해 루도는 자진해서 스파이 활동을 시작하는데요.
रोहित सर, हाँ ये देखिए सर, कोई हमारे फाइल्स एक्सेस कर रहा है लेवल 1 फोल्डर से। क्या हो रहा है? 능청스러운 연기와는 다르게 발각되면 목숨을 잃을 수도 있어 조마조마한 마음으로 파일이 빨리 복사되기를 기다리는데 कोई हमारे सिस्टम को हैक करके फाइल्स कॉपी कर रहा है। कौन सी फाइल्स? बाबा की फाइल्स। Found it. Jakarta. No wait, it jumped to Belarus. He's using a decoy server. Give me 30 seconds. कोई हेल्प चाहिए क्या? नहीं। रोहित proceed. 루도는 8년 전 사건 이후로 팀에 남아는 있지만 유령인간 취급을 받고 있었는데요. 그래서 무슨 짓을 해도 티가 잘 나지 않았죠. Found it. मुंबई। ये लोकेशन तो हमारी बिल्डिंग का है। कोऑर्डिनेट्स इसी फ्लोर के हैं। वर्कस्टेशन 12। 더 이상 머물 곳이 없던 허니는 결국 왕국의 공주인 자신의 본래 집으로 돌아옵니다. युवरानी हनी मंदाकिनी। हेलो नारबा भाई। बागुलावा। नाडिया, ये मेरे अन्ना है, प्रताप रुद्र राजू, माय एल्डर ब्रदर, माय डॉटर नाडिया। से हेलो। हाय। हेलो युवरानी नादिया। इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू। आप छोटी सी थी जब देखा था, अब तो आप बड़ी हो गई हो। क्यों आई हो यहाँ हनी? I need a place to lie low. मैं जब भी किसी से छुपना होता है तुम यहाँ आ जाती हो। 사생아인 자신을 싫어했던 아버지와는 다르게 배다른 남매였던 오빠 라지는 그녀에게 잘해주었기에 위기가 찾아오면 항상 돌아오곤 했었는데요. काफी दिनों से बीमार है। मेरे लिए वो बस बोलने के लिए पिताजी है। कभी मुझे अपने बच्चे के जैसे नहीं माना। Actually, I don't really know मैं बार-बार क्यों आती हूँ यहाँ। या शायद ये तुम्हारा घर भी है। शायद एक वजह मैं हूँ। Honey, I hope you know I'm not like Nana. You're nothing like Nana. 한편 바바의 기밀 파일을 탈취한 루도는 친구 라이와 차코랑 오랜만에 합류하게 됩니다. वाओ, तूने तो पूरी सीक्रेट लाइफ सेट कर रखी है यहाँ पे। मुझे ना तेरा समझ में नहीं आता कुछ। क्या कर रहा है? लूडो। अरे जिस इंसान ने तुझे सबसे बड़ा धोखा दिया, तू उसी की मदद कर रहा है। उसने जो किया है हमारे साथ, उसके बावजूद तू उसकी मदद करने जा रहा है। मुझे लगा कि हनी मर गई बेलग्रेडॉप में, लेकिन नहीं, वो जिंदा है और उसके साथ हमारी बेटी है उसके साथ। मैं बचाने जाऊंगा उसे। 오랜만에 뭉친 세 사람은 8년 전과 다를 게 없이 서로에게는 여전히 장난스러웠죠. काश हम लोग सेपरेट नहीं हुए होते। Then we'd be dead. We had to disappear. हम लोग प्रोटोकॉल की वजह से फॉलो कर रहे थे और मैं तुम दोनों को खोने का रिस्क नहीं ले सकता हूँ। अरे बात बोलूं, दिल से बोलता हूँ। I miss you guys यार। तुम दोनों के बिना कुछ सही नहीं लगता। And I had lost purpose. 루도 또한 진짜 가족이 필요했었고 두 사람이 사라진 상황에서 다른 길을 찾지 못해 어쩔 수 없이 바바를 따랐다는 것을 고백합니다. ये लॉयल्टी ना बहुत कमीनी चीज होती है। हमें पता है कि हम कुछ बुरा कर रहे हैं, फिर भी कर देते हैं। क्या चल रहा है हनी? सब बता दूंगी आना एक दिन। कुछ लोग हमें ढूंढ रहे हैं, पर जब तक वो लोग हैं, खतरा हमेशा रहेगा। 사실 허니는 계속 도망 다닐 수만 없다는 것을 알기 때문에 자신이 아는 세상에서 가장 안전한 장소인 이 궁전에 나디아를 맡기고 직접 적을 소탕하러 나갈 생각을 하고 있는데요. अन्ना, I trust you. कुछ भी हो, आप नाडिया को कुछ नहीं होने दोगे, राइट? बहुत टाइम पहले ना मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी। Big mistake or small mistake? बिग मिस्टेक। Then आपने sorry बोला? अभी बोल दूंगी। 허니는 딸에게 자신이 나가서 싸워야 하는 이유를 말해주며 두고 갈 수밖에 없는 이유를 아이가 이해해 주기를 바라죠. I have to take care of them, okay? Let's go. No. Let me take care of the bad men this time. आप मुझे पापा की तरह छोड़ के जा रही है ना? Wait. Open your bag. Why? बैग खोलो और दिखाओ मुझे। 나디아는 엄마의 가방에서 가장 소중해 보이는 물건을 꺼내서는 그걸 찾기 위해서라도 자기를 다시 찾아오게끔 만듭니다. मैं इसे सेफ रखूंगी। इसके लिए अब जरूर वापस आओगे।
मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगी। मिल गया जो तू सोच रहा था वही है ये सब बाबा के कॉल रिकॉर्ड्स है 루도는 빼내온 바바의 기밀 파일에서 이상한 점을 발견하는데 그건 바로 그의 통화 기록 중 시타델과 주고받은 건수가 상당히 많다는 것이죠. बनी प्लान क्या है? 쫓기는 신세가 된 허니가 시타델의 연락을 취할 거라는 점과 바바의 기록도 면밀하게 살펴보기 위해 통신센터에 침입해 통화를 엿듣는 작전을 세우는데요. 대부분 기술자로 되어 있어 손쉽게 시스템을 점거합니다. जल्दी करना। टाइम लगता है मुझे लगा तू जीनियस है। मदद नहीं करेगा सोच रहा हूँ। 리더도 아니고 컴퓨터 기술도 없어 굳은 일을 혼자 떠안을 수밖에 없는 차코. साले कमीने, बारह की मदद नहीं कर सकता था। अरे अच्छा किया तूने। तुझे मदद चाहिए थी क्या? आमीन ये जो नंबर्स देख रहे हैं ये सारे नंबर्स सिटीडल के सिस्टम में रजिस्टर्ड है या पब्लिक फोन से कॉल नहीं आया है इसका मतलब हनी ने अब तक सिटाडेल में किसी को कांटेक्ट नहीं किया है। तो अब क्या करें? 아직은 안 했지만 반드시 시타델의 연락을 취할 거로 생각하며 허니의 통화를 무작정 기다려보기로 하는데 라이의 기대에 부응하기라도 하듯 얼마 안 돼 허니가 시타델에 전화를 걸죠. हनी क्या चाहिए? प्रोटेक्शन बदले में हमें क्या मिलेगा? जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है 8 साल से। ठीक है, दोबारा नहीं बोलूंगा। 무적함대를 대가로 제시하자 요구를 거절할 수 없었는데요. क्या चाहिए उसे? प्रोटेक्शन। Why should we help her? अरमाड़ा है उसके पास। कुछ भी हो जाए बच के जाने नहीं चाहिए वो। Be alert. 혹시 모를 상황에 대비하며 장소의 구조를 파악하며 전투에도 대비하는 허니. हनी 8년 만에 눈앞에 나타난 옛 연인 라이를 보고는 놀랍니다. क्यों आए हो? रिलैक्स हनी। पहले मेरी बात सुन। क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारे बाबा ने भेजा है। जी किसी ने नहीं भेजा। 여전히 그가 바바의 앞잡이라 생각하기 때문에 진심으로 싸우며 격렬하게 저항하는데 हनी ये ट्रैप है। सिटाडेल में जाना सेफ नहीं है तुम्हारे लिए। अंडर एस्टिमेट मत करना, बहुत टेढ़ी चीज है ये। 바바팀에서 나온 그의 말을 한번 믿어보며 일단 함께 함기로 결정하는데요. I know अरमाड़ा तुम्हारे पास है। उसी की वजह से तुम्हारी जान खतरे में, उसी की वजह से तुम जिंदा हो। सिटाडेल में जाना क्यों सेफ नहीं है? There's a traitor in Citadel. 8년 만에 만난 팀원들. 하지만 그들은 자신들의 팀을 와해시킨 그녀에게 아직 앙금이 남아있었죠. तुमने जो किया वो किसी भी एंगल से सही नहीं है सही कूल एक्ट मत करो प्लीज इस नंबर के साथ काफी टाइम से बाबा टच में है उसी की मदद से बाबा डिटेंशन से निकल पाए कुछ तो बड़ा प्लान कर रहे हैं ये लोग लुक एट दिस और ये नंबर डायल होने के बाद ही एक अजीब सी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है 루도는 이미 내통하고 있는 시타델의 배신자가 누구인지 파악한 상태였고 그들과 만나본 적 있는 허니 앞에서 프로필을 보여주는데 ये वही सिटाडेल की आईपी एड्रेस है जो बाबा के टच में था दिस इज द मोल दिस इज ईगल Tell me about her, डॉक्टर। क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि तुम जिंदा हो? क्यों नहीं बताया कि हमारी एक बेटी है? You don't think you owed me this much?
아이가 생긴 지 8년의 세월이 흘렀습니다. 그동안 자신에게 살아있던 것도 딸이 있다는 것도 감춘 채 살아왔던 그녀에게 화가 날 수밖에 없는 라이. तुम्हें पता है इतने सालों में मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कभी और अच्छा है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं हूं because you're better without me. हनी और बनी का चैप्टर ओवर. It's fucking over between us. 8년간 그가 겪었을 슬픔이 마음속에 와닿았는지 허니는 나디아에 관한 이야기를 해주기 시작하죠. कराटे में 2 बार बैक टू बैक गोल्ड मेडल मिला है उसे 4 लैंग्वेजेस मालूम है कोई भी सिचुएशन में सोच सकती है छुप सकती है और निकल भी सकती है शी इज मेंटली वेरी स्ट्रांग शूट करना सीखना है कहती है कि अगर मैंने नहीं सिखाया तो अपने आप सीख लेगी और एल्स एक दिन अपने पापा से सीख लेगी. 아이의 얘기를 들으며 마음이 뭉클해진 라이는 자신보다 더 고생했을 그녀에게 고마움을 표시하며 8년 만에 두 사람은 화해하고 관계를 회복하게 됩니다. हनी हम स्टैंड अप है ओके चाको मैं संभाल लूंगा. तू फैमिली के पास जा. बोला ना तुझे. गो. थैंक्स. चलो मर मत जाना बस. ये तुम्हारे लिए, नाडिया के लिए. तुम जब भी चाहो उससे बात कर सकती हो या कहीं से भी उसको ट्रैक कर सकती हो. 요원샨을 찾은 허니는 자신들이 알아낸 사실을 그에게 전해주는데요. वैसे तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ? लास्ट टाइम मिलना मिस हो गया ना तो एक ट्रैकर लगाया तुम्हारी गाड़ी पे एंड आई एम नॉट अ थ्रेट मैं यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं आई हूँ हेल्प कर सकती हूँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है सिटाडेल में कोई विश्वा से कम्युनिकेट कर रहा है 1 साल से जानना है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में मोल्ड कौन है 그녀가 말해주는 시타델을 배신한 자의 정체는 상상도 못한 인물이었습니다. I have read every single report. You've killed the head of Citadel. सिटाडेल ने मेरे माथे पर लेबल लगा दिया था ट्रेटर. वो भी झेल लिया मैंने. क्यों? क्योंकि हमने जो सपना देखा था सुनी. कौन सा सपना? सुन पाओगी? उसके लिए ये तो बहुत छोटी कीमत है. 1년 전 바바가 수감된 감옥에서 만난 두 사람은 오랜 꿈에 관한 이야기를 나누게 되죠. कि हम एक साथ सिटाडेल को छोड़ देंगे हमेशा के लिए. सिटाडेल रिंसी का घर था. उसे छोड़ने की सोच भी नहीं सकता. वो लोग हम सबको कंडीशन करते हैं. वो कहते हैं कि तुम्हारी वफादारी सिर्फ उस एजेंसी के प्रति है. 사실 아주 오래전부터 바바와 시타델 전 국장이자 주니의 남편인 린지는 항상 새로운 조직을 만들기를 꿈꿔왔었습니다. हम अपना एक अलग नई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और ये जो गलती कर रहे हैं ना सिटाडेल में हम उसको रिपीट नहीं करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. We'll make a near perfect organization. That's what we will do. और तुम ये चाहते हो कि इन सब पे मैं आंख बंद करके यकीन कर लूं कि तुम और रिंजी सिटाडेल के खिलाफ काम कर रहे थे. I have proof, सुनी. 친구의 죽음은 대의를 위한 희생이라 생각하며 바바는 오래전 같은 꿈을 꾼 친구들과의 사진을 증거로 보여주는데요. मैं अपना एक फाउंडेशन बनाऊंगा. सुनी तुम कह रही हो कि पिछले 1 साल से शी इज बिटरिंग सिटाडेल. योर प्रूफ इस सीडी में सारी डिटेल्स है. 샨에게 아무런 대가도 없이 내 통자에 대한 정보를 넘기는데 사실 시타델이 그 배신자를 처벌하는 것만으로도 그녀에게는 바바를 무력화할 수 있는 큰 힘이 되죠. 한편 자신을 옥죄는 계획이 진행되고 있다는 사실을 모른 채 바바는 라이나 케다르처럼 자신을 위해 맹목적인 충성을 바칠 또 다른 아이를 찾고 있었는데 한편 라이는 악연이 된 그와의 인연을 결판짓기 위해 보육원으로 찾아옵니다. आपका रूटीन बदला नहीं बाबा. ऐसे थे तुम. और वो मौका आपने मुझे दिया और बदले में मैंने आपको अपनी पूरी जिंदगी दे दी. We are even. क्या फिर से मेरे सामने आए ना. I know. लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आया क्योंकि आपको जो चाहिए ना वो मेरे पास है. 같은 시간 더욱 상부에다가 주니의 변절을 보고한 샨은 체포 명령을 받고 국장인 그녀를 끌어내리고 있었죠. जूनी ने आपकी हेल्प की डिटेंशन से एस्केप करने के लिए.
फिर बाहर आके आपने फाउंडेशन के हेल्प से सब कुछ फिर से शुरू किया। आपने अपने एजेंट्स को ऑर्डर दिया कि वो हनी के पीछे जाए, मेरे बेटी के पीछे जाए। ये चाहिए था ना आपको? दिस यू वांटेड टू किल हनी एंड माय डॉटर फारमाडा। हाँ, It's not that right. जाओ ले लो पापा। 그가 무기보다는 평화를 추구하길 바랐지만 바바는 여전히 무적함대 기술을 갖기를 원했는데요. क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? शायद तुम देख पाते कि मैं क्या देख रहा हूँ। कोशिश की थी मैंने बाबा। एक नई दुनिया बना सकते थे हम, सिर्फ हम दोनों मिलकर उसको कंट्रोल करते। नहीं चाहिए थी मुझे वो दुनिया, नहीं चाहिए थी। ये सब आपको चाहिए था बाबा, मुझे नहीं चाहिए था। 속셈이 있었다고는 해도 어릴 적 자신을 키워준 사람이었기 때문에 라인은 그의 야망은 빼앗아도 목숨까지는 차마 빼앗지 못한 채 그를 영원히 떠나가 버립니다. चाको ने मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं पूछा, तो मैंने भी उनसे कुछ नहीं पूछा। एक दूसरे से मिलने से पहले हम क्या थे? 한편 케다르는 친구인 척 차코의 가족들에게 접근하여 라이의 소재를 파악하려 하는데요. कहाँ गए हैं वो? पर जब घर पे आते हैं फोकस पूरा फैमिली पर। वैसे मैं तो मान ही नहीं सकता हूँ कि अपने चाको भैया ऐसे फैमिली मैन। उन्होंने आपको बाबा के बारे में बताया क्या? नहीं तो मुझे तो कुछ नहीं बताया। अरे भाभी मैं तो ऐसी बकता। 수상한 모습으로 집안을 수색하던 그는 원하는 것을 확보한 후 차코의 아내를 해하는데 लूडो का एड्रेस मिल गया, वो सारे वहीं होंगे। भैया बाबा सेड टू स्टैंड डाउन। ये चैप्टर हमारे लिए खत्म हो चुका है। बाबा's gone weak। जिस बाबा को मैं जानता हूँ वो कभी पीछे नहीं हटते। ठीक है फिर मैं आपके साथ चल रहा हूँ। मैं करूँगा पूरा, सोच ले, बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। 더 이상 라이와 허니의 일에 관여하지 말라는 명령에도 불구하고 과잉된 충성심은 왜곡된 애정으로 변해 결국 독단적으로 행동하려 하죠. 케다르는 비밀 아지트의 소재를 파악하여 부하들과 쳐들어오지만 눈치 빠른 루도는 시스템을 모두 파괴하고 도망갑니다. 그런데 그중 솜씨 좋은 요원이 한 명 껴있어 허니에게 건네주었던 위성 전화를 추적하는 데 성공해 머무는 궁전의 위치를 파악하게 되는데요. Stop! आगे मत आना। हाय नाडिया। Who are you? नाडिया क्या कर रही हो? गन नीचे करो। कौन है ये? Is he safe? ये तुम्हारे पापा है। 8년 만에 처음으로 아빠와 딸이 만납니다. पापा को हग नहीं करोगी? I don't hug. ओके, हाई फाइव। 케다르에게서 몸을 피해 숙소에 숨어있던 루도는 그들이 허니의 위성 전화를 추적했다는 것을 알고 서둘러 이 사실을 전해주죠. I don't get it. बाबा को हमारे पीछे आने का कोई मोटिव नहीं है। I'm sure केडी अकेले ऑपरेट कर रहे हैं without बाबा's permission. Are we back in play mode? You know, honey and I love you. पता है ना कि हम आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे. 두 사람은 나디아를 안심시키며 궁전을 지키기 위한 전투를 준비하게 됩니다. जो लोग हमारे पीछे थे, they found us. आप नाडिया को लेके आउट हाउस जाइए, जल्दी प्लीज। हाँ लेकिन अन्ना, you need to go now. Ready? With you. 마침내 수많은 부하와 함께 케다르가 습격하고 대비 중이던 두 사람이 대응을 시작하는데 गाड़ी आगे बढ़ाओ।
전술 호흡이 척척 맞는 허니와 라인. 이미 궁전 내부까지 적들이 침입해왔지만 이 둘을 이기기는 쉽지 않아 보이는데요. बाहर निकल बाबा तुझे छोड़ सकते हैं मैं नहीं 케다르의 의지를 따라 이 싸움에 나선 나콜은 은신처에서 그녀를 놓쳤던 실패를 만회하기 위해 직접 처리하러 나섰지만 결국 죽음을 맞게 되죠. देखो ओके अन्ना हनी ठीक हो तुम हम यहाँ से जा रहे हैं अन्ना नाडिया के साथ ध्यान रखना Sorry for everything. Thank you. 허니는 자신들이 궁전에 있는 게 모두를 위험에 빠뜨린다는 것으로 생각해 나디아를 데리고 서둘러 궁전 밖으로 도망을 갑니다. 끈질기게 쫓아오는 적을 처리하지만 라이가 운전하는 차량의 바퀴가 총에 맞아 터지면서 조작이 되지 않는 차량은 벽을 향해 돌진하는데요. बेटा ठीक हो हनी ओके ओके 멀리서도 느껴지는 많은 차가 무기도 체력도 소진한 두 사람에게 절망감을 주는데 नहीं तुम लोग बोट के पास जाओ I'll cover you What? हम साथ जाएंगे. अब मम्मी के साथ रहना पापा आ रहे हो ओके हनी दिस इज नॉट अबाउट अस इट्स अबाउट नाडिया यू हैव टू गो हनी ये मेरी वजह से शुरू हुआ है 허니는 그를 혼자 두고 떠나면 다시 볼 수 없을지도 모른다는 걸 알면서도 딸인 나디아 때문에 떠날 수밖에 없었죠. 자신의 불행을 모두 라이 탓으로 돌리는 케다르가 분노의 이성을 잃고 공격해옵니다. कुछ गलत हुआ तेरी वजह से 싸움 실력이 비슷해 치열하게 공격을 주고받지만 좀처럼 승부가 나지 않는 두 사람. तुझे लगता होगा तू बहुत स्पेशल है ना घर बुलाया होगा तुझे माँ से मिलवाया होगा मुझे भी मिलवाया था नकली था जिस माँ से तू मिला था ना वो कोई और होगी खाना बनाया था तेरे लिए बर्न चिकन बाबा का लॉयल्टी प्रोग्राम टू टेस्ट अस 케다르는 바바에 대한 비난에도 어떠한 반론도 할 수 없었죠. लीव रही अलोन सुन लेना चाहिए अब मेरी तरह तू भी बाबा के खिलाफ गया ना है तो हम एकदम एक जैसे आई गॉट यू गुड दो पूरी फौज आ रही है राई तू निकल 한편 이 싸움을 지켜보고 있던 허니와 나디아는 마음을 졸이며 그가 오기를 기다리는데 자신이 막아서지 않으면 가족이 무사할 수 없다고 생각해서인지 라이는 단신으로 달려오는 차량을 막아섭니다. 이 드라마는 첩보 요원들을 소재로 하며 시타델 시리즈의 인도 이야기를 담고 있는데요. 시리즈물을 보는 시청자에게는 다른 시리즈와 접점이 생기는 설정을 찾는 재미가 있고 처음 시리즈를 접한 시청자에게는 화려한 액션과 긴장감 넘치는 전개 그리고 놀라운 반전의 재미를 선사해주죠. 깊고 넓은 세계관과 첩보 요원의 삶을 경험해보고 싶은 분께 추천해드리는 드라마 시타델 허니버니였습니다.